हाय एवरीवन, मेरा नाम है वरुण सुपरजॉनी जॉनर। एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ ई स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम CSGO की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पे IEM न्यूयॉर्क 2020 चल रहा था और वहां पे फ्यूरिया ने चैंपियनशिप ट्रॉफी हासिल कर दी, तो उसके ऊपर नजर डालेंगे। फिर न्यूज़ और सोशल मीडिया के बगैर कोई हमारा एपिसोड पूरा नहीं होता, तो वो भी होगा। लेकिन अगर इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो इस बार इंटरव्यू पिछली बार से भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। पिछली बार तो चलिए हमने सिर्फ ई स्पोर्ट्स का एक अलग पहलू देखा था, इस बार हम गेम्स के ही बिहाइंड द सीन्स चले जाएंगे एंड वील बी हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ रियली अमेजिंग गेम डिजाइनर। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। And it's time for the North American division of IEM New York 2020। तो आप लोग अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही इंटेंस हाइलाइट्स हैं आपके लिए। रीजन की 12 टीम्स को 2 ग्रुप्स में रैंडमली स्प्लिट किया गया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि न्यू इंग्लैंड वेलर्स ग्रुप स्टेजेस में एक ही मैच हारेगी और ट्रायम्फ और फ्यूरिया जैसी टॉप टीम्स को हराकर ग्रुप ए में सेकंड प्लेस लेगी। इट्स क्रेजी एंड ऑफ कोर्स इविल जीनियसेस एंड फ्यूरिया आल्सो एडवांस्ड टू द प्लेऑफ्स। ग्रुप बी की अगर बात करें, सब कुछ काफी प्रेडिक्टेबल था। 100 थीव्स और टीम लिक्विड दोनों ही टॉप डॉग्स थे एंड टीम 1 ने 3rd पोजीशन लिया। नाउ स्पीकिंग अबाउट प्लेऑफ्स, फ्यूरिया ने यह दिखाया कि वो नॉर्थ अमेरिका की टॉप टीम है। पहले टीम लिक्विड को उन्होंने BO3 में हराया, उसके बाद सेमीफाइनल्स की अगर बात करें तो वहां पे उन्होंने इविल जीनियसेस को हराकर अपना स्पॉट हासिल किया ग्रैंड फाइनल्स में। 100 थीव्स ने ग्रुप बी में 1st पोजीशन लिया और इसलिए डायरेक्टली उन्हें एंट्री मिली सेमीफाइनल्स में, और उन्होंने अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखा। वहां पर भी 1 को हराकर वो सीधा ही NA फाइनल्स की तरफ पहुंच चुके थे। अब इस चीज में आयरनी ये थी कि इस लाइनअप के अंदर एक भी नॉर्थ अमेरिकन प्लेयर नहीं था, बिकॉज 3 ऑस्ट्रेलियंस, 1 नॉर्वेजियन एंड 1 कीवी यहाँ पे भिड़ने वाले थे ब्राजीलियंस के साथ। अब एक बात आप लोगों को ये भी बोल दूं कि मेक श्योर यू टेक इट ऑल इन, बिकॉज दिस विल बी द लास्ट टाइम यू विल सी 100 थीव्स इन अ CSGO ग्रैंड फिनाले। अब 100 थीव्स ने पहला जो मैप था न्यूक, वहां पे 16-9 से जीत तो हासिल कर ली, लेकिन फिर जो उनका पिक किया गया मैप था उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी फाइट दी, लेकिन वहां पर फ्यूरिया ने मैच को क्लोज किया 16-14 से और सीरीज को टाई कर दिया। फ्यूरिया ने इसी के साथ अपने विनिंग मोमेंटम को कंटिन्यू रखा और अगले 2 मैप्स वर्टिगो और मिराज पर भी जीत हासिल की। 16-4 और 16-11 के स्कोर लाइन से फ्यूरिया बन चुकी थी चैंपियंस, लेकिन इसी के साथ 100 थीव्स का CSGO चैप्टर क्लोज हो चुका था और ये एडवेंचर उन्हें एक रनर अप के खिताब के साथ ही एंड करना पड़ा। अब फ्यूरिया ने ना सिर्फ IEM न्यूयॉर्क 2020 का खिताब जीता था नॉर्थ अमेरिकन चैंपियंस होने का, बल्कि उन्हें इनवाइट भी मिला था इंटेल ग्लोबल चैलेंज का, जो कि दिसंबर में होने वाला है। अब वीडियो गेम्स खेलना हम सबको ही पसंद है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये गेम्स बनाता कौन है जो वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ आता है कि कैरेक्टर्स की एबिलिटीज़ क्या होने वाली है, एबिलिटीज़ को बैलेंस कैसे किया जाएगा, आपका एक्सपीरियंस एज अ गेमर मेन्यू के अंदर कैसा होगा, साउंड इफेक्ट्स कैसे यूज होंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? वेल, डिज़ाइनर्स होते हैं जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग गेम के एंड फिनिश प्रोडक्ट तक उसको बिल्ड करते हैं, जस्ट लाइक एन आर्किटेक्ट। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेरा भी मन था एक टाइम पे गेम डिज़ाइनर बनने का, लेकिन मैं आपको पास्ट में आज उतना पीछे तो नहीं लेकर जाऊंगा, थोड़ा ही पीछे जाएंगे हम और फिर से पास वाले सुपरजॉनी से बात करेंगे, जहां पे उनके साथ इज अ वेरी टैलेंटेड गेम डिज़ाइनर पूर्णिमा सीथारमन, लेडीज एंड जेंटलमैन, समवन हु वाज रिसेंटली इंडक्टेड इन वुमेन इन गेम्स हॉल ऑफ फेम। तो चलिए जल्दी से चल के इंटरव्यू पे नजर डालते हैं, क्योंकि मेरा तो काफ़ी देखने का मन है। Okay, तो फ्यूचर वाले SuperJonny का एक और बार so much thank you, and we are here with another interview for you guys in World of Esports. Well,
यूजुअली हम लोग गेम्स की बात करते थे, सबसे पहले 2 एपिसोड्स में हमने वैलोरेंट के ऊपर बात की, उसके बाद वी मूव्ड ऑन टू द फाइटिंग गेम्स, बट इस बार और थोड़ा सा ट्विस्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वेयर वी हैव समवन रियली रियली स्पेशल विद अस, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम Poornima Seetharaman, who is an amazing game designer and has also received an award and has been inducted into the Women in Games Hall of Fame. So Poornima, welcome to the show. How are you doing? Hi, thank you for having me. I'm doing great. How are you doing? I'm doing great as well. Thank you so much for asking. चलिए we'll start off a little bit slow. क्योंकि बाकी usually gamers आते हैं तो फिर उनके लिए I just like go full on into the action. But since people are not aware of what game designing is and what actually happens in the background, why don't you give us an introduction about yourself and what you actually do? Sure. So मैंने इंडस्ट्रीज में चालू किया था about 2006 में एंड तब से लेके अब तक मोस्टली गेम डिज़ाइन मेरा प्राइमरी डोमेन है. आई हैव प्लेड रोल्स लाइक प्रोडक्ट मैनेजर, स्टूडियो हेड. मैंने खुद की 2 कंपनीज भी चालू किए थे एंड आई थिंक गेम डिज़ाइन एज सच सबको लगता है कि वो सिर्फ एक आइडिया गाय है, यू नो, आइडिया पर्सन, दे कम अप विद दीज आइडियाज. बट गेम डिज़ाइन बहुत कुछ है. एक आइडिया को लेके उसमें गेम बनाना, दैट इज़ द मोर की कंपोनेंट. वो आइडिया को ट्रांसमिट करना अपने टीम में और एग्जीक्यूट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. गेम डिज़ाइन में गेम मैकेनिक्स, सिस्टम डिज़ाइन, लेवल डिज़ाइन, एक्सपीरियंस डिज़ाइन, इकोनॉमी डिज़ाइन, सब कुछ आ जाता है. सो इट रियली जस्ट डिपेंड्स ऑन कि आपका कहाँ इंटरेस्ट है और कहाँ पे आप अपना स्किल सेट बेटर कर सकते हैं. Well, definitely अपना वो जो एक नीश होता है वो आपको खुद ही पिक करना होता है, लेकिन it is something that's a little bit more complicated क्योंकि usually जैसे मैंने बताया we have a lot of professional players and for them it's all about the passion of playing games and being competitive. But game design में हाँ passion तो same रहता है for video games, but it's not a competitive thing. You are the ones who are making the games. So वो जो एक चीज था, where did you recognize your passion for making video games? So I think that passion came from playing games. मतलब शुरुआत तो वहीं से होती है. एंड जब गेम खेलते समय आप क्या फील करते हो, जो इमोशंस आता है जब गेम के यू नो व्हेन यू आर प्लेइंग इट, आई थिंक वो रेजोनेट कर जाता है. फॉर मी मैंने शुरू किया था एटलीस्ट मोर गेम सेंट्रिक बोलूँ तो एज ऑफ एम्पायर्स 2 और वॉरक्राफ्ट 3 से. एंड जब वो खेल रही थी तब मेरे फ्रेंड्स ने सिखाया था कैसे खेलना है. And then I started beating them at their games. So they used to come up with strategies to beat me. And तब मेरे को समझ में आया कि सिस्टम डिज़ाइन कितना सही है. Like I used to love Persian, so मैं काफ़ी हद तक वही चूज करती थी. And उन्होंने ऐसे different strategies बनाने की कोशिश की and then I had to come up with counter strategies. तो खेलते समय तो ये बहुत मज़ा आ रहा था. फिर मेरा सोच ऐसा गया कि ये बनाया किसने and what is the thought process behind that level of balancing. तो मैंने अपना ही डिफरेंट कैंपेन शुरू किया बनाने को एंड देन आई शेयर्ड इट विद माय फ्रेंड्स एंड दे प्लेड इट एंड आई थिंक आई स्टार्टेड टू रियलाइज हाउ फन दैट इज टू क्रिएट समथिंग दैट अदर्स आर गोइंग टू प्ले एंड गिव यू फीडबैक ऑन एंड देन यू कैन इम्प्रूव इट. चलिए एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं जानना चाहूँगा कि when people are starting out into game designing, like my personal experience when I was trying to get into it and why I left it was because there's not enough guidance to become, well, how do you go about becoming a designer? Because you try and look up resources online, आप YouTube पे चीजें देखते हैं and you just get overwhelmed with a lot of information. So what were the challenges that you faced when you were starting out? When I was starting out, I think आजकल के जितने tutorials और resources है वो भी नहीं था. Yeah. So this was like back when there used to be a platform called Orkut and all that. I'm talking about then. Yeah. So मैं एक्चुअली एक गेम प्रोग्रामर के तौर पे एक कंपनी ज्वाइन की थी एंड वहाँ पे गेम डिज़ाइन अपॉर्चुनिटी आया एंड दे गेव मी 1 month's टाइम टू से लाइक फिगर इट आउट एंड गिव अस अ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बाय द एंड ऑफ 1 month. एंड उन्होंने मेरे को ये डंजन्स एंड ड्रैगन्स के मैनुअल्स दिए थे एंड आई वाज लाइक गोइंग इनटू दैट, रीडिंग अबाउट. ऑब्वियसली वो ख़त्म तो नहीं होगा, जहाँ जहाँ चाहिए वो पेजेस एक्सेस कर रही थी, बट मुझे लगा क्या वास्ट यूनिवर्स है एंड इट्स ब्रिलियंट, राइट. मेरे को तभी समझ में आया कि गेम डिज़ाइन जो चीज़ है इट्स
beautiful, and I wanted to like just go deeper and deeper into it. Alright, emergence lete hain hamari conversation se, and let's talk about the game development scene in India. So we recently had a pretty big title called Raji that came out, and it's been blowing up pretty nicely as far as the community is concerned. So what do you think that sort of means for the Indian market? So I'm really glad that people are coming forward with titles like Raji, but that's a lot of hard work that they're also putting into, and a lot of money, right? It's 3 years into development to create something of this quality, and a lot of time they are taking pay cuts, and like basically essentially they are not earning anything out of it yet. The problem that I see for us within the Indian gaming industry to come through with something like that is funding. Funding India में mostly we are looking at जहाँ पे fantasy sports या esports leagues में वहाँ पे funding है. Then we have like your education and entertainment sector में है, या फिर your teen pattis and your ludos, and these companies get funded and for the right reasons, and even real money gaming, right? But I think India as a culture, we don't look into this premium or larger titles. We don't want to invest in that because we don't know much about it. So which is probably why we need more of those high risk investors coming in. तब जाके ज़्यादा राजी बनेंगे, right? Like, and we want that. We want us to be able to create something like great indie games, great AAA titles. AAA का मतलब ही होता है हाई बजट, और वो हमारे पास है नहीं. तो आई थिंक जैसे जैसे हम इवॉल्व करेंगे, एंड राजी का सक्सेस काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड भी करता है कि हमें वो विजिबिलिटी मिले, right? And we have had few games doing that, and actually a lot of developers are doing that. And हमने अभी देखा है कि ज़्यादातर youngsters करते हैं. अभी I have seen that more or less people I have worked with is more than like a decade, like 14-15 years. We have all grown to a highly responsible place, right? Like financials and too many responsibilities and dependencies हो जाता है. तो अभी वो risk लेना हमारे लिए बहुत ही hard है. So youngsters on the other hand, like they are like, we can take that hit for a while. Let's experiment. There are a bit of both. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो seniors है वो नहीं risk ले रहे, definitely ले रहे. But just when we talk about commercials, majority wise, this is the problem. So we have talent, but then without funding, you cannot support yourselves financially. So I think when more investors come together, we will see some wonderful games. I believe in the talent in India. I've worked with people 15 years ago who were amazingly talented and who still are. And those talents are hidden. None of them know. They are all very awkward to come forward, but they are brilliant. I mean, these are people who created an entire engine like Unity. So imagine the kind of potential they can bring. So yeah, I'm looking forward to see where this industry grows, and I'm looking forward to seeing some amazing games coming out of it. But all right, so we've been talking about game design and development and programming, and well, funding now just after Raji. So a question to the audience who are thinking a question from the audience basically, who are thinking of picking up game designing as a career. ये रहेगा, what are the basic necessities of a person who is looking to get into game design? Yeah, so I think first and foremost, हम सोचते हैं game design मतलब game बनाना, right? But game design is just one part of it. So first basic advice जो मैं offer करती हूँ कि आप पहले game development पूरा देख लो. आप जो सोचोगे वो field exist करता है game development में. Marketing से लेके community management, everything exists. We have product management, जहाँ पे ज़्यादातर लोग MBA schools में से आते हैं, not necessarily from a gaming domain, right? तो आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या बनाना है, और फिर आपका स्किल सेट फिर मैटर करता है. तो आर यू गुड एट कोडिंग, आर यू गुड एट ड्राइंग, आर यू गुड एट कमिंग अप विद आइडियाज एंड देन मेकिंग दोज आइडियाज ट्रांसमिट इनटू गेम्स. सो गेम मैकेनिक्स, सिस्टम डिजाइन, बैलेंसिंग, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग सूट है या आपका स्ट्रॉन्ग फीट है, तो देन यू आर एबल टू get into game design. Game design in general requires a lot of good documentation, basic communication skills. No matter whether you start out as an intern or you're getting to the top tier of game design, you still need to communicate a lot. You will be the kind of interdisciplinary contact across all the teams, right?
एंड ये सब के लिए और आइडियाज पिच करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका सारे आइडियाज रिजेक्ट होंगे, तो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. And so you have to, first I will say, identify game design or game development disciplines. See what fits you best, and easiest way to assess is participate in a game jam. तो जो उसमें जो प्रोसेस लग जाता है, आपको पता चलेगा कि आपका जेन्यून इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं, क्योंकि काफी हद तक जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा. तो गेम जैम इज लाइक द बेस्ट वे, और क्रिएट योर ओन गेम एंड पुट इट आउट देयर. You will understand the entire pain process that comes with game development. It's not as rosy as it looks, right? Yeah. So a lot of things, a lot of problems, and right when everything comes together, something else will break. सब होता है, तो you need to go through that pain once to make sure you really like this discipline and like this domain and you want to continue. And after that, there are, like, connect with all other Facebook groups. I put some of them up on my website, where you can join some of the Discord groups. Jahan pe you will find more developers and more aspiring game developers. You can partner with them, talk to them. Sometimes you will end up having the same kind of problems, and one person might have solved it. And so stop trying to reinvent the wheel. Jahan pe mil raha hai, take it and then fix it. ओके, तो इसी के साथ हमारा इंटरव्यू खत्म हो चुका है लेडीज एंड जेंटलमैन. चलिए एक बार वापस से फ्यूचर सुपर जॉनी के पास चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट ही हैज इन स्टोर फॉर अस नेक्स्ट. ओके, तो पूर्णिमा से बात करने के बाद मेरे को तो जो मेरा गेम डिजाइनिंग का शौक था वो वापस मिल चुका है, और मैं भी थोड़ा कुछ ट्राई करूंगा. उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इस फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें. एंड वेल, कोशिश होगी कि आप लोग किस तरफ से मेरे को फ्यूचर में कोई एक बहुत बड़ा ई स्पोर्ट्स टाइटल देखने को मिले. चलिए, अब समय हो चुका है कुछ न्यूज़ की तरफ बढ़ने का, और इस बार न्यूज़ में तो मसाला काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पहली खबर ये है कि फोर्स ने अपने बैंड कोच जोनर को फोर्स स्कूल के लिए हाल ही में साइन किया है. फोर्स के अकॉर्डिंग जोनर का एक्सपीरियंस प्लेयर्स को काफ़ी हेल्प करेगा, बट एक बैंड कोच को साइन करने के बाद उन्हें कम्युनिटी का काफ़ी हेट सहना पड़ रहा है. चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जहां Cloud9 ने अपनी और के कुछ प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, और रीजन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. इस टर्मिनेशन का रीजन है कोविड-19 पॉलिसीज का वायलेशन. और के अकॉर्डिंग काउंटर, जेटी, मॉर्टिम, सोनिक और टीसी ने मिलकर टीम हाउस में एक गेस्ट को बुलाया था, और ये पहली बार नहीं था. इससे पहले भी इन सबको वार्निंग मिल चुकी थी, बट रिपीटेड वायलेशंस के बाद ऑर्गेनाइजेशन को इन सब का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ा. तो हमारी तीसरी खबर आज की ये है कि काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव में सोर्सेस के अकॉर्डिंग एक सोर्स 2 अपडेट हमको देखने को मिल सकता है, जिसमें हमें रियल टाइम लाइटिंग एंड शैडो सिस्टम्स देखने को मिलेंगे. ये ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है, बट हमारे डेटा माइनर्स तो लगे ही रहते हैं लीक्स को ढूंढने में, और ये लीक गेब फॉलोअर्स ने ट्वीट करके दी. चलिए अब वक्त तो चला है प्रो टिप्स के सेगमेंट का, जहां इस बार हमारे साथ जुड़े हैं मोजेस, जो हमें बताएंगे फेज क्लैन के सीक्रेट नेडिंग स्ट्रैटेजीज. Hey everybody, this is Moses and welcome back to the MDL Pro Tips powered by Mountain Dew Game Fuel. I'm going to highlight a round here between FaZe Clan and Fnatic. This is from ESL Pro League Season 11, their most recently played Pro League a couple months back. What I want to show in this clip is the tactics that FaZe are using to counteract any kind of mid-pressure that Fnatic will be coming out with, and things to keep your eye on. Look at the kind of fight it forces Flusha into. He's going to be forced into a solo bad decision off of Catwalk with no assistance from teammates. He's got 2 in connector. JW is going to get cleaned out in connector with nades. And essentially, this is a utility tactic by FaZe Clan that can have future implications on the match. The nice thing about it is that for FaZe, it's going to establish, a trend of them being able to take mid control off of this and force Fnatic into some awkward decisions. Now look at all the utility that they're going to throw. There's a smoke window, smoke catwalk, Molotov connector, flash cat and flash connector, an HE into connector, another smoke at top connector behind the
defense. And look at this flight from Flusha. There's no ability for JW, who's being naded, who's being flashbanged, who's being molotoved, to get into any kind of a fight. Now there's going to be another HE thrown into connector, a third one thrown into connector, and one final flash just for good measure. Now, at 1 minute and 30 seconds in the round, FaZe have established mid control. They've got a 5-on-3 due to all this, and they still have plenty of utility left over. So it's a very nice sequence that you can teach any of your teams, any of your teammates to utilize to counteract this kind of a pressure. In the future of this half, that Fnatic defense is going to have to make a decision. Do you want to push up and be ultra aggressive, or do you want to sit back and be ultra passive? Because you know if you're in the middle ground of fighting on catwalk and connector, you're going to get a barrage of utility. And that is the way that FaZe is going to be able to influence the rest of this half based off the success of this one tactic. चलिए अब बारी है सोशल मीडिया और मीम्स के सेगमेंट की, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं CSGO की टी साइड की बेस्ट स्ट्रैटेजी। अब कुछ टीममेट्स ऐसे होते हैं जो मरने के बाद बहुत ही ज्यादा ज्ञान बांटना चालू कर देते हैं, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन खुद यूज करी होती तो शायद जिंदा होते। अब कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो CSGO में डिफ्यूज करते टाइम की को होल्ड नहीं करते, और फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसे करतब देखने को मिलते हैं। But he can't do any more than that. The defuse will come through, and VP won't be able to deny the bomb plant. They will be able to get the retake and claim the lead away from the Pride T side. Wait. Oh God! Is that enough? Has he still got this? No, he doesn't. No, God, please, Oh no! my God, Neo! Oh my God! तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में और ढेर सारे ई स्पोर्ट्स कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस वाज वर्ल्ड ऑफ ई स्पोर्ट्स। आई विल सी यू गाइस अनदर टाइम। पीस।